पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की। इतनी ऊंचाइयों पर विजय पाना मात्र गगनचुंबी चोटियों को फतेह करना नहीं है, ये देश की समूची शक्ति को दर्शाता है, हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है। युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते, वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिंदगी और मौत में उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ। कारगिल में विजय, भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस। आवाज कम कर दीजिए, हमें कम तो हमको कोई कम। कारगिल में विजय, भारत के संकल्पों की जीत। कारगिल में विजय, भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत। कारगिल में विजय, भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत। कारगिल में विजय प्रत्येक देशवासी की उम्मीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी। साथियों, कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था, वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई। उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो तुम्हें क्या करना है, तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। अपना रक्त बहाकर जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया, उन शहीदों को, उनको जन्म देने वाली वीर माताओं को भी मैं नमन करता हूं। In the Kargil events are only veterans as well for the nation. These are the scenic peaks located in Dras region of India's Kargil district. These mountains have witnessed the valor of Indian soldiers, those who made the supreme sacrifice for their motherland. The Batra Peak, Tiger Hill, Mushko Valley and the Tululing Peak were captured by Pakistani troops in 1999. That is, during the Kargil War. But the evil designs of an envious neighbor was thwarted by the resolve of Indian soldiers. A war fought on high altitudes where carrying troops and ammunition was extremely difficult, and alert intruders sitting on hilltops had the upper hand. But scripting history, the braves of Indian Army marched ahead.
and took back each and every inch of their territory. A feat a proud nation proudly remembers. They had occupied all the regions which were coming into us. So they are all dominating their heights. We had no option than to go uphill. Uphill in mountains is a Herculean task. So our brave soldiers, Indian Army, Air Force, we all together, we have to actually handle this very orthodox types of operations in which we had no choice, and for that we had to evolve our own plan. For those who fought the war, it is a scene etched in their memory. Veterans swell up with pride when they set foot on the strategic peaks captured by India over 2 decades ago. Standing tall, they remember the sacrifices of fellow soldiers who let go of their present for the nation's better future. It is difficult initially to judge the enemy's intention, to get hint about the enemy. That was initially taking some time, but after once we had taken the complete hint of and the complete situation was taken stock of, thereafter things become easier. Otherwise, what you are saying is right. No battle is fought as a one battle. It is always fought in parts. So you have certain operations going in certain area of the battle, and thereafter certain operations going, and they together combined together under one strategy, which is planned at the highest level. They actually, the one young officer, they won this war. Credit goes to them. Our job is to make the plan, to execute is the main job of them. And I think so. This we could achieve just because of their Josh and the directions given by the headquarters. And the motivation level was so high that we have to take it back. We have to take it back at any cost. 23 years ago, over 520 soldiers died fighting for the country. They left behind parents, wives, and children. Many such war widows have now gathered in Dras, faces shining with pride as they remember their loved ones who died in the line of duty. These proud women visited the Lamochin Peak. During the war, all major peaks under attack were visible from this spot. On the 22nd anniversary of Kargil War, celebrations are being held across the country. We are right now at Lamochin Heights, which is at around 11,000 feet above the sea level. This is the place which was most strategic for the Indian Army during the Kargil War. As you can see from this place, all the major peaks that were captured by Pakistan Army could be seen from here, and it was one of the most important strategic locations of the Indian Army. In your visuals that you see is the Batra top, which was named after the Indian Army Captain Batra, who laid his life on the same peak. It's said that he managed to save all his team members while capturing the peak, while giving his own life. Cheered by the enemy army, were recaptured later by the Indian Army. With video journalist Feroz Idris Lone, WION World is One. Now, I request Captain U.P.S. Bhadoria ji to say a few words on this victorious days, 26th Kargil Vijay Diwas. Before I start, I would request all the participants to switch on their video so that I can see. I can see a number of participants have not switched on their video, so I can't see. So my request is, can you please switch on your video so that you are in the frame and I can see all of you. Some Okay, I think the participants and the members are joining, and that's a very good sign.
मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ बोलूं उसके पहले जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो कारगिल युद्ध के बारे में क्या जानते हैं, उनका क्या सोचना है, उनका क्या उसके बारे में क्या जानकारी है। उसका थोड़ा सा एक दो पार्टिसिपेंट मुझे बताएं, तो उसके बाद मैं चर्चा को जारी रखूंगा। देन आई कैन कंटिन्यू देयर आफ्टर। Gautam ji, my request is you can detail one or two participants just to give an insight into the Kargil War, what it was all about. Any two participant speak on Kargil Vijay Diwas, whatever they know about the Kargil Vijay Diwas. Anyone? Yes, Rishabh Tiwari, you may go ahead. Sir, Jai. After the 1998, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बम थे, वो दोनों कैपेबल थे, उनके पास परमाणु बम थी। इस चीज को देखते हुए हमारी प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं, इस को सलामी दी जाती है। पर मई में पाकिस्तान एक गति की अपने उसका उल्लंघन करता है और अपने बंकर्स को भी कैप्चर कर लेता है। इस वजह से लास्ट सेक्टर में और मेनली कारगिल में ये वॉर शुरू हो जाती है 1999 में। और इसको कैप्चर करने के लिए हमारी सेना बहुत ही बहादुरी के साथ कम्पीट करती है और उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। और ये 14 मई से शुरू हुआ था सर, और आज के दिन और सर इसमें 3 ऑपरेशन चलाए गए थे आर्मी, नेवी और वायु सेना के द्वारा, और वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी किए गए थे। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन व्हाइट सागर, और सर एक और था नेवी द्वारा चलाया गया था नागर। Thank you, Rishabh Tiwari. Another is कौन बोलने वाले? Rahul Devkurmi. Rahul Devkurmi. Another participant wants to speak about Karan Rajat. Any other participant wants to speak on Kargil Vijay Diwas? पार्टिसिपेंट्स में वो वाला जोश नहीं है जो हमारे कारगिल के जवानों को था उस वक्त। जैसा कि हमने टीवी फुटेज में देखा, ये जो युद्ध हमने जीता था, इसमें जो हमारे यंग ऑफिसर्स थे, यंग जवान थे, उनके अंदर कितना जोश था। तो कारगिल विजय का जो श्रेय है, ये हमारे उन बहादुर जांबाज सिपाहियों को जानना चाहिए, फौजियों को जानना चाहिए, जो भी इसके साथ जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कारगिल के बारे में पढ़ा है, और एक मोटे तौर पर ब्रॉडली एवरीबडी इज अवेयर व्हाट वाज कारगिल वॉर और अबाउट। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये कारगिल वॉर जो था, एक जो स्टैंडर्ड जो वॉर होते हैं उससे कुछ अलग था। पारस्परिक जिसको बोलते हैं, कन्वेंशनल वॉर जो होते हैं, जिसको आज की श्रेणी में हमें हाइब्रिड वॉर बोल सकते हैं। जो वॉर होते हुए भी दोनों कंट्री ने वॉर डिक्लेयर नहीं किया था, क्योंकि हमारी जो कारगिल लद्दाख क्षेत्र में जो पीक्स थी, इस पे कैप्चर किया गया था। पाकिस्तान वो तो कबूल करते, उनके एज पर देम इट वाज नॉट देयर आर्मी, इट वाज मर्शनरीज हु हैड कैप्चर्ड, बट एक्चुअली इट वाज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर आर्मी हु हैड ऑक्यूपाइड आवर टेरिटरी। तो उनको फ्लश आउट करने के लिए हमारी जो आर्मी जो थी,
उन्होंने ये लंबा युद्ध चला, जैसा कि पार्टिसिपेंट ने बताया, मई से लेके जुलाई 1999 में करीब 527 सैनिक जो हमारे थे उन्होंने शहादत पाई, and there were around 1300 to 1400 people, soldiers who were injured. जैसा मैंने बोला, ये क्लासिकल वॉर नहीं था, इसको आज के युग में एक हाइब्रिड वॉर बोलते हैं। हाइब्रिड वॉर का मतलब है कि किसी ने डिक्लेयर नहीं किया कि वॉर हो रहा है, परंतु वॉर हो रहा है। तो ये उस तरह का एक वॉर था, और आप सबको मालूम होगा कि वहां पे लड़ना इतना आसान नहीं था। मौसम, उसके अलावा हाई एल्टीट्यूड पे लड़ना सुनने में बड़ा सरल लगता है, बट इट्स नॉट दैट इजी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हायर लेवल पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कम हो जाती है तो आपकी कार्य करने की क्षमता वो भी कम हो जाती है। हालांकि मैं आर्मी से नहीं हूँ, मैं तो नेवी से हूँ, लेकिन फिर भी इतनी जानकारी जो है मेरी उसके हिसाब से, क्योंकि आई हैव आल्सो बीन टू हाई एल्टीट्यूड्स, आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव देयर। और उसमें भी अगर आपको लड़ाई करनी पड़े दिन रात 24/7, so it's not a very easy task. It is very very difficult. तो आर्मी का जो ऑपरेशन था, जैसे किसी ने बताया, ये जो कारगिल का जो युद्ध था, ये हर एक सेना का अपना एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन विजय बाय आर्मी, सफेद समुद्र और समथिंग बाय एयरफोर्स, एंड नाकाबंदी जो भी बता रहे थे तिवारी, आई थिंक तिवारी, it was actually Operation Talwar by the Indian Navy. Predominantly जो ऑपरेशन था, it was army, because it was, we had to capture the land, but at the same time all the other two parts of the armed forces, that is the Air Force and the Navy, also played a very crucial role in support of the operation. Since I am from the Navy, I'll talk about Navy, क्योंकि नेवी का क्या योगदान रहा है शायद आप लोगों को शायद नहीं मालूम। क्या मैं पूछ सकता हूँ किसी को, any of the participant who knows what was Navy's contribution towards कारगिल वॉर, अगर किसी को कोई जानकारी है। ऑपरेशन का नाम तो किसी ने बताया, पर वो ऑपरेशन में क्या हुआ उसके बारे में अगर कोई जानकारी दे सकता है तो। Anybody? I think, sir, we didn't know about the real facts about the Indian Navy. So you have chosen a right man to talk on this webinar. Yes, sir. देखिए, ऐसा है कि कोई भी जीत जो है, जो भी मिलिट्री विक्ट्री आजकल के जमाने में, it has to be joint operations. This operation, this war was predominantly army because of the reason I told you, because we had to capture territory, and that too high altitude territory. As we have seen in one of the TV footages, somebody talked about war being fought at high altitudes, but very few people know that the war was also fought at deep seas. समुद्र जो है वहां पे, वो कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय नौसेना ने एक प्लान बनाया कि हमें जो पाकिस्तान की जो ट्रेड रूट्स हैं, ट्रेड रूट जो समुद्र से होते हैं, विच इज थ्रू द सी, उसको हमें चोक करने का एक प्लान बनाना है। हम भले ही चोक ना करें, परंतु हम ये दिखाएं कि हम इसको चोक कर रहे हैं। जैसा कि शायद आप लोगों को मालूम है, पाकिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह है कराची। तो पाकिस्तान में जो सामान आता है रोजमर्रा की जरूरत की चीज, खासतौर से ऑयल, तेल, पेट्रोलियम, दवाइयाँ, फूड, 90% जो आइटम वो लोग इंपोर्ट करते हैं वो समुद्र से आता है। इट कम्स थ्रू सी। तो व्हेन यू चोक दी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको मैरीटाइम लैंग्वेज में बोला जाता है, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो आपकी लड़ाई पे पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास तेल नहीं है, एमिनेशन नहीं है, खाना नहीं है, तो जो युद्ध पहाड़ियों पे चल रहा है वो ज़्यादा सस्टेन करने में प्रॉब्लम होती है।
तो इसको अंजाम देने के लिए ऑपरेशन तलवार को एग्जीक्यूट किया गया, अंडर विच the ships of the Western Fleet, which is based in Mumbai, and the Eastern Fleet, which is based at Vizag, all the ships, they joined, and they were operating on the western coast, North Arabian Sea. Geographically तो शायद आपको मालूम होगा North Arabian Sea कहाँ पे है, अरब की, I hope so, by and large everybody is aware कहाँ है North Arabian Sea, बे बंगाल, geographically इतनी जानकारी तो सबको होगी। हमारा भी जो इंडिया का भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तेल वगैरह है, जो सऊदी अरब गल्फ कंट्री से आता है, इट कम्स फ्रॉम दी पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ से जो नीचे आता है समुद्र के थ्रू। इसी तरह पाकिस्तान का जो मेन सोर्स था, दैट इज देयर ऑयल दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम पर्शियन गल्फ। तो हमारी जो समुद्री जहाज थे भारतीय नौसेना के, हमारे जो एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने उस एरिया में पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान में जो भी ट्रेड होने वाला था, जो भी शिप्स उनके लिए सामान ले जा रही थी, उनके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। दैट मींस दे स्टार्टेड ग्रिपिंग देयर एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग। उनके इस एक्शन से पाकिस्तान को ये फीलिंग आई कि ये कहीं ना कहीं इंडियन नेवी है, वो हमारे ट्रेड को ब्लॉक करना चाह रही है, जिसके कारण फलस्वरूप एक जो माहौल होता है जहां आप डर जाते हैं कि भाई अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि अगर हमारा सप्लाई नहीं आएगी तो हम कैसे सस्टेन करेंगे, हमारा राशन नहीं आएगा। राशन तो खैर सेकेंडरी है, मेन इज ऑयल। ऑयल का बहुत महत्व है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। अगर ये आने की सप्लाई अगर रुक गई तो जो पाकिस्तान की जो कारगिल में युद्ध चल रहा था, जो पेट्रोल इस्तेमाल होना था, या उनकी गाड़ियां चल रही थी, या एम्युनिशन चाहिए, तो वो वहाँ कैसे पहुंचेगा। तो इसका बड़ा मानसिक एक असर हुआ। और जहाँ तक मुझे याद है, उस वक्त जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्होंने बोला कि अगर इफ वी डिक्लेयर वॉर टुडे, सीइंग द एक्टिविटी ऑफ द इंडियन नेवी in the North Arabian Sea, we have fuel storage only for 6 days. That means अगर उस वक्त ऑफिशियली युद्ध डिक्लेयर हो जाता तो पाकिस्तान के पास 6 दिन का तेल की सप्लाई थी, जिससे वो युद्ध लड़ सकते थे। तो इसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ा। ये जब सारा ऑपरेशन चलता रहा, इसने हमारी आर्मी और एयरफोर्स को थोड़ा टाइम दिया कंसोलिडेट करने के लिए कारगिल वॉर में। और इस तरह से भारतीय नौसेना ने भी एक अपना छोटा सा रोल अदा किया। शायद आपको इसकी जानकारी ना हो सकता हो, क्योंकि मैं नेवी से हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक बड़ा साइलेंट रोल था नेवी का, बहुत साइलेंट रोल, जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को जानकारी ना हो। अगर आप इसके बारे में कोई पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, एनीबॉडी कैन आस्क। कोई कैडेट कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है सर से तो पूछ सकता है। भारतीय नौसेना के बारे में, उस ऑपरेशन के बारे में, आर्मी के बारे में शायद मैं ना बता पाऊँ। भारतीय नौसेना के बारे में ऑपरेशन जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन तलवार के बारे में। ऑपरेशन तलवार अनम्यूट कर लेंगे, अनम्यूट करके पूछेंगे। राहुल देव, मुझे तो आपके यहाँ सारे आर्मी कैडेट लग रहे हैं। आप नेवी कब लेके आ रहे हैं अपने सागर में? यस, वो क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सर। बहुत जल्द सर, हम लोग प्रयास में लगे हुए। दिवस सर, एक जो सबसे बड़ी जो जानकारी जो है कि इंडियन नेवी के बारे में हमारे कैडेट को कमांड्स के बारे में नहीं पता है सर, कितने कमांड्स हैं और सभी कमांड्स के जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो किस तरह से करते हैं।
जिससे कि हमारी देश की जो है जो पूरी की पूरी जो गगन है वो पूरी सुरक्षित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारतीय नौसेना के पास 3 कमांड है। वेस्टर्न नेवल कमांड जो हमारा है, ये बॉम्बे में, मुंबई में लोकेटेड है, which is very close to Pakistan. You know, we are sharing our boundaries, maritime boundary with Pakistan. ये ऑपरेशनल कमांड है। जैसे कि आर्मी में कोर होता है आपका, फाइटिंग, तो इसको कॉम्बेटेंट कमांड बोलते हैं। ऑपरेशनल कमांड है, ये बॉम्बे में है। ये तो आपका वेस्ट कोस्ट कवर हो गया। अब हम चलते हैं पूर्वी तट की तरफ। पूर्वी तट में हमारा जो कमांड है वो विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम अगेन इज ऑपरेशनल कमांड। ये 2 ऑपरेशनल कमांड हो गई। उसके अलावा कोचीन में हमारा ट्रेनिंग कमांड है। इंडियन नेवी का ट्रेनिंग कमांड इज लोकेटेड एट कोचीन। सो एवरीथिंग रिलेटेड विद ट्रेनिंग इन द इंडियन नेवी is done through Southern Naval Command. It is under their jurisdiction. So these are the 3 major commands. Besides this, naval stations, naval air stations are spread all along the coastline of India, including the islands of Lakshadweep, Andaman Nicobar, where we have got a very good presence. बाकी छोटे छोटे जो मेट्रो जो और भी सिटीज है, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, गुजरात की बहुत सारी सिटीज हैं, आपका उड़ीसा हो गया, ये सब यहाँ नेवी है। और जो इंडियन नेवी के जो जैसे कि अभी हमारे नेवी भर्ती होंगे, उनकी ट्रेनिंग होती है इंडियन नेवल शिप चिल्का में। इंडियन नेवी में एक प्रथा है कि हमारे जो भी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, यूनिट हैं होते हैं, उनके पहले हम शिप लगाते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर चीज जहाज है। तो ये तो होगी कमांड के बारे में बात। और जो मुख्यालय जैसे कि भारतीय बाकी और सेना के साथ एप्लीकेबल है, इट इज लोकेटेड एट दिल्ली नेवल हेडक्वार्टर्स। थैंक यू सर, जो आपने ज्ञानवर्धन किया हम लोगों के इंडियन नेवी के बारे में और उनके जो 3 कमांड्स के बारे में। सर, एक जो सबसे बड़ी जो हम लोगों की जिज्ञासा होती है इंडियन नेवी के बारे में, कि इंडियन नेवी में हमारे चूंकि हमारे सारे कैडेट्स हैं, गर्ल्स और बॉयज, इनकी एंट्री लेवल किस किस पोस्ट पे कर सकते हैं? सेलर या ऑफिसर्स में अगर जाना चाहें या सेलर से जाना चाहें तो वो किस तरीके से करें? ये जैसा कि you would have seen, Navy has just come out with the entry into Agniveer. That is for the sailors. It's come in the, I think it's already on the net, open domain में अभी आया हुआ है. So entries are for both, depending upon your education. It could be through officers also, or the officer it is through NDA and through Naval Academy, where there is a combined examination conducted by UPSC. So you can choose. One can go to NDA, thereafter come to Naval Academy and join the Indian Navy. Or if somebody prefers to join the Indian Naval Academy, which is located at Edimala in Kerala, that individual can directly join the Naval Academy. Besides this, we have a number of other options also. Technical entry schemes where if somebody has done a BTech, BE, then they are given opportunity. I don't know whether आपकी यूनिवर्सिटी में भी नेवी वाले आते हैं कि नहीं आते हैं. Earlier they used to come and visit all the universities, especially if they have engineering colleges वगैरह, उधर आते थे. तो DMPR का एक साइट है, इंडियन नेवी का DMPR के नाम से अगर आप याद रखें, it will give you the entire information about the various schemes for joining the Indian Navy. Thank you very much, sir. Sir, can we show another video on Kargil Vijay Diwas, sir? बिल्कुल. Why not? Please go ahead. ये सेक्शन बाहर निकला है, मतलब तुम्हारा DSC में तो सही लिखा है, इसमें गलती लिखा है, इसमें मैंने लिख दिया है ना? इसमें जो लिखा है IBUD लिखा है कि नहीं, IBUD लिखा है, वो उसमें नहीं आएगा मैडम, सिंपल में आएगा IBUD.
मार्कशीट में करेक्ट लग रहा है ना। अपने से आई अभी 6 तक तो जाना है ये और जो 4 कोर्स आ जाएंगे उसमें से वो बी हट गया है आई हट गया उसमें तक सही है। राकेश को बराबर भी बोलते हो राकेश को मैं जानता हूँ ना तो बोलते हैं कि बड़ा यहाँ बैठा बाजू में मैंने बुलाया शांत चाहते हैं ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया हम शांत चाहते हैं ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। The safety, honor and welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time. This is the Chaitwood motto engraved in the Indian Military Academy that becomes the motto of the Indian Armed Forces officers after they complete their training. This motto also becomes the guiding light of the officers as long as they serve and even after that. On the occasion of Kargil Vijay Diwas today, we bring to you the story of two brave officers who lived this motto till their last breath. They made the supreme sacrifice during the Kargil War, and their story of unparalleled courage has become immortal in the annals of Indian forces. This is the true wartime stories of the two officers who became first martyrs of Kargil War. Captain Saurabh Kalia was just a little short of 23 years of age when he became a martyr in 1999. At an age when most youth can't figure out what to do in life, he laid down his life to protect the nation. He was commissioned in December 1998 in the 4th Jat Regiment and was posted in Kargil just a few months later. Before the full-fledged war of Kargil began, he and 5 other soldiers were sent to Bajrang Post at a height of 14,000 feet to check reports of intrusion in the Kaksar region. A JCO was supposed to lead the patrol party, as is the usual norm, but Captain Kalia volunteered to lead. They were about to return from their recce when the unexpected happened. After a continuous crossfire with Pakistan Armed Forces from across the LOC, Captain Saurabh Kalia and his troops ran out of ammunition. They reported this to the base camp and called for reinforcements. But before the reinforcement could arrive, they were surrounded by a platoon of Pakistani Rangers and were captured alive. These 5, along with Captain Saurabh Kalia, were the first to be captured by the Pakistani intruders, who were most likely the members of Special Services Group or the Northern Light Infantry. The Indian authorities by that time had no idea about their capture, but Radio Skardu of Pakistan had announced that 5 Indian soldiers and 1 officer were taken captive. This announcement and this event finally led to the discovery of hundreds of Pakistani Army personnel who had fortified themselves on treacherous peaks in Kargil. What followed then left the entire world in shock and in anger. What then followed was 22 days of extreme brutality and inhumane treatment, perhaps unheard of in any modern era conflict. Every single point of the Geneva Convention was disregarded openly, and these brave hearts were subjected to torture of unspeakable magnitude. Post-mortem examinations of their bodies later revealed that the Pakistanis had tortured them by burning their whole bodies with cigarettes and by piercing their eardrums with hot rods. Not just this, eyes of all these 6 soldiers were punctured before being gouged out. Most of their teeth and bones were broken, their skulls were fractured, their lips were cut, nose had been chopped, and their genitals were also mutilated. Then they were shot dead from a very close range after 22 long days in captivity.
The post-mortem report also confirmed that these injuries were inflicted before death. The entire nation had wept when the mortal, disfigured remains of Captain Kalia and other soldiers wrapped in tricolour were returned. Later, the confessions of a Pakistani officer who had tortured Captain Kalia was broadcast in Pakistan. The officer had openly detailed the horrifying tortures inflicted upon him. Despite undergoing such extreme tortures, none of the 5 soldiers and Captain Kalia disclosed anything to the enemies. For 23 long years, his father, N.K. Kalia, has been trying to get justice for his martyred son and has been running from pillar to post to hold those responsible accountable. Despite approaching as much as 3 presidents and writing to various union ministers over a period of time, the only reply he got was the acknowledgement that his letters had quest and fight for justice is still unfulfilled and remains a mirage caught in bureaucratic apathy and oblivion. Was to move to Valley for the strengthen the road of construction. Hercules, something has hit my plane. I am ejecting. These were the final words squadron leader Ajay Ahuja had conveyed to his airbase just before going down. He had just become the flight commander of squadron number 17 of the Golden Arrows, a specialist photo recon squadron when the Kargil War broke out in 1999. On May 27, 1999, as part of the Operation Safed Sagar in Kargil, a photo recon mission was launched over the Indian side of the LOC in Kashmir to detect Pakistani intrusion. At this stage, for the Indian Air Force, it was a recon mission and not an offensive or retaliatory one. Just as he was about to be airborne for the reconnaissance mission, squadron leader Ahuja heard a radio call that a fellow officer, Flight Lieutenant Nachiketa, had ejected from his MiG-27 aircraft after an engine flamed out. He changed his mission profile and set course towards the last location of the ejected pilot. Despite being told that surface-to-air missiles were being fired in the area, squadron leader Ahuja carried out orbits to try and pinpoint the location of the crashed aircraft and pilot. He sent his number 2 back to base, but himself continued the search, ignoring the threat to his own life. After a few orbits and some time, he was able to locate the possible crash site and transmitted this information to the rescue helicopters. Unfortunately, at this stage, his own aircraft was hit by an FIM-92 Stinger handheld missile. With exemplary presence of mind, he attempted to steer the aircraft towards a safer area. But when the aircraft engine flamed out, squadron leader Ahuja had no choice but to eject. Nobody knew what happened to him until his martyred body was returned to India. However, Flight Lieutenant Nachiketa was captured and was later returned to India alive. Flight Lieutenant Nachiketa was the only POW to be captured and returned alive during Kargil War. When the post-mortem of his body was done at the base hospital in Srinagar, it was found he was killed in a very cold-blooded way by Pakistani soldiers within the Indian side. He was shot from near his right ear and the bullet came out ripping the left ear. There was also a bullet in his chest, due to which his liver, intestines and other organs were injured. His left knee too was also completely fractured. There were injury marks on his right and left thighs, and his right lung was also completely injured. These injuries were not due to his ejection from his MiG-21, but were inflicted upon him by the Pakistanis. His murder is still considered a cold-blooded one in the history of India-Pakistan wars. Squadron leader Ahuja was posthumously awarded Veer Chakra for his bravery in the face of enemy attacks. 23 years later on, these memories are still as fresh as newly inflicted wounds in minds of every Indian. And every year, they return to haunt.
Victory in Kargil came at great cost for us, for the nation, and for the families of all those brave souls who made supreme sacrifices during those 2 months in the summer of 1999. हम शांत चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या और पास करो सर। Sir, with your permission, we have our last video on Paramveer Chakra, Captain Vikram Batra. आप हमारे साथ हैं। Most certainly, but before you start, I just request. I got a very small video of 3 minutes by Khan sir. Okay. To explain you about the role of the Navy. Okay. Simple terms. हम जाएंगे, हम भी कितने बजे से है? हमारे पास सूचना ही नहीं आई उसकी, सूचना ही नहीं आई। पर निकाल के एक बार सबको, यही तो बात है। गजब हाल है मैडम आपका। Can you see? कम्युनिटी में रख देना, कम्युनिटी वाली फाइल में प्ले कर देना। ये वाले इसके टाइम टेबल है, तो टाइम टेबल वाली फाइल में डाल देना। ठीक है, फाइल में। और ये क्या फाइल है? इसमें क्या है, सबकी वो पेपर ही पर टाइम पूरा है, इसलिए I think there is some problem. So maybe next time मैं आपको, अगर हम फिर दोबारा कभी मिलते हैं तो आपको नेवी के बारे में I can show you some footages about the operation, not only Kargil, other operations also. So it will give some awareness among the cadets. Some of them may not know about how ship looks like, submarine कैसे होती है। उनकी जिम्मेदारी है, नहीं मिलते हैं, ये कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है। But you can go ahead with your video. समझ में नहीं आता, मिलते नहीं है। वो उनकी ड्यूटी है, जब मिले तब उनको जाए कि आदमी उसके काम के लिए थोड़ी बैठा है। गौतम जी, you can start, you can go ahead please. कॉल स्कूल वाली फाइल में, कम्युनिटी फाइल में। हाँ, कम्युनिटी फाइल में, कम्युनिटी वाली पर आई ना बननी कलेक्शन। हाँ, स्कूल नहीं, डिपार्टमेंट एक्टिविटी। हाँ, डिपार्टमेंटल एक्टिविटी में। Gautam ji, I think our participants have some questions. You can take the question. Sir, Raise your hand. after completing the 4-minute video, sir, then we will take the question, sir. Last week, but many families and of their loved ones, we remember our Kargil heroes. My company's success was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. He was the bravest of the brave, whose slogan Ye Dil Mange More defined the spirit of some of India's bravest sons, soldiers who fought some of the most intense infantry battles since the Second World War. For his bravery, Vikram Batra was honored with the Paramveer Chakra. At the height of the Kargil War, the NDTV team met the young captain just days before he perished, fighting to liberate the impossible point 4875 in the Kargil Heights. His men knew him as Sher Shah, and the enemy had heard of this name as well. They were on the same frequency which were we on our radio sets, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Sher Shah. Oh Sher Shah, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge, and my guys, they went wild. Okay, how dare a Pakistani troop can challenge us? Vikram's next operation on the 7th of July 1999 was his last, and what he personally managed to do helped send the Pakistani Army into full retreat. In bloody hand-to-hand combat with Pak soldiers,
Vikram charged, screaming Durga Mata Ki Jai, his Jackriff regiment's war cry. Entering a stone fortification, he killed 5 Pakistani soldiers using his gun and bayonet, but ultimately perished when he was targeted by an enemy machine gun nest. Buoyed by his leadership, his soldiers attacked the Pakistani position with vengeance, capturing point 4875. Most people think that we do not have to fight hand-to-hand fight now. But Kargil war, there was a lot of hand-to-hand fighting. It happened in point 4875 also. Many places this kind of a thing. I'll share a very personal incident. When I was young, a school-going kid, I really used to get scared looking at a dead body. And when the body was taken out of the coffin and the tricolor along with his cap was handed over to mom, I took the body out of the coffin and I hold it in my hands. And that was the first cremation ever in my life. Whatever fear I had for death, it went up. Now, if any cadet wants to ask any question, sir. Rishabh Tiwari wants to ask any question. Ankit, unmute yourself, then ask your question. यस सर सर ये पूछ रहे थे कि ऑपरेशन तलवार कौन से पोर्ट से ऑपरेट हुआ था? ऐसा होता है कि जो भारतीय नौसेना का कोई भी ऑपरेशन होता है किसी पोर्ट से ऑपरेट नहीं होता है, ये एट सी लड़ा जाता है। जो पोर्ट होता है वो पोर्ट के सपोर्ट में होता है। मतलब जैसे इस ऑपरेशन तलवार में इट वाज मुंबई, वो जो जहाज सप्लाई किए गए, मेरे ख्याल से किसी को अनम्यूट करना है, क्लियर नहीं आ रहा है। तो ये जो शिप्स थे दे वर बेस्ड एट मुंबई इन द सेंस फॉर दैट टाइम। क्या होता है कि जहाज में एक ड्यूरेशन के लिए राशन होता है, फ्यूल होता है, एमिनेशन होता है। जब वो खत्म हो जाता है तो उसके 2 तरीके हैं, या तो समुद्र में ही उसको रिप्लेनिश किया जाए जो दूसरे जहाज के द्वारा होता है। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट फीजिबल, इट कम्स बैक टू द पोर्ट। सो इन दिस केस ऑपरेशन तलवार, द ऑपरेशन वाज बीइंग coordinated from Mumbai port. किससे लगी क्या लकड़ी से? Any other question? Yes. I would like to request you, sir, to share your few experience which can motivate to our cadets to join a naval or army in coming future. सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे चीफ गेस्ट बना के, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। Being to interact with all of you, and Army, Navy, Air Force, all 3 forces have a very challenging, very adventurous life, and every force has got its own advantages. So there have been number of experiences, and Navy has given me chance to sail right from Gujarat to Tamil Nadu to Kerala to every place, to Andaman Nicobar, and the life in the armed forces is such that we interact with people from various states. So Navy, being the Navy, I can understand. I cannot speak, but I can understand all these southern languages. It could be Telugu, Kannada, Malayalam, Tamil. I can understand Gujarati, Bangla. हिंदी तो खैर समझ में आती है, बुंदेलखंडी तो हमें खूब समझ में आती। तो what I mean to say is that this gives the life in the armed forces. It's a way of life. It gives you so much exposure.
किस तरह से हमारा इंटरेक्शन होता है, and we meet people from all over India, learn about their cultures. There are a lot of bonhomie, आपस में कैसे मिलते हैं, एक दूसरे के लिए कैसे सहायता करने के लिए, we are there to help them out. It has got its own, its own charm. म्यूट कर दीजिए. And since I was in the field of intelligence for a very long time, so I have done a lot of things related to intelligence, which I obviously can't share with you on this platform. So intelligence is a very important aspect of for any operation. Any military operation is driven by intelligence. अगर आपके पास इंटेलिजेंस होगी, अच्छी इंटेलिजेंस होगी, तो आपका ऑपरेशन उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा. राहुल देव कुर्मी. सर मैं ये पूछना चाहूंगा सर, वो जो ऑपरेशन तलवार था तो वो सर किसके द्वारा लीड किया गया था सर? दोबारा पूछें. ऑपरेशन तलवार सर किसके द्वारा चलाया गया था सर? कोई भी ऑपरेशन जो कराया जाता है, देखिए वो हमारा जो सिस्टम है, इट हैज टू बी राइट फ्रॉम टॉप, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो नीचे नीचे आता जाता है, हर एक लेवल पे आता है. और इस ऑपरेशन में जो उसकी जो प्लानिंग हुई होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही होगी, फिर नेवल हेडक्वार्टर में हुई होगी, उसके बाद ये वेस्टर्न नेवल कमांड के पास आया. तो ये पूर्वी नौसेना जो कमान है, इसका ही ऑपरेशन था. वैसे नहीं बोल सकते ये तो इंडियन नेवी का ऑपरेशन था, क्योंकि ये पश्चिमी तट पे हुआ था, तो इसमें वेस्टर्न नेवल कमांड जो थी उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था. जय हिंद सर. जय हिंद सर. I want to ask something. Please ask. Sir, why Kargil is important for both of the nations? For both nations, India and Pakistan. Why Kargil is important in 1919? See, any war is important for both the parties. Nobody wants to lose. For India, it was important because the Pakistanis had captured the very strategic post in Leh region, which could give them access to the entire stretch of Kashmir from Kargil to Kashmir, so they could have dominated. So it was important for us to flush out all these people from there. And if they had the domination, if they had the upper hand, they could have slowly moved into the Kashmir, which we would not have ever liked to happen. So that was our concern. And for Pakistan, it was an adventure by them. So any kind of loss would be a kind of face saving, in the sense उनकी जो बेइज्जती होती, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि ये एडवेंचर था उनका, उन्होंने एक रिस्क लिया जिसको पूरे वर्ल्ड इंटरनेशनल कंडेम किया. तो उनके लिए किसी भी तरह का हारना जो था उनके लिए बेइज्जती की बात होती. तो हर एक कंट्री का अलग अलग उसका जो इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस डिफरेंट था, उनके लिए डिफरेंट था. Thank you, sir. Next is Tanya Gandhi. Sir, one more question. After Tanya Gandhi, you may ask. Okay. Jai Hind, sir. Yeah, Jai Hind. I can't see you. Video on kare, video on kare, Tanya. Yes, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. Sir, I'm from 2MP Naval Unit. 20? Sir, here from 2MP Naval Unit, sir. 20 Naval Unit. Very good. Nice to interact with Naval Cadet. Good. Thank you, sir. Sir, here we could see, sir, in the Kargil War, we had, sir, Army, Navy and Air Force all together, sir. So what do you think, sir, we should work on the theatre command, sir? I wanted to know this. So, I mean, you're too young to ask this question, but nevertheless, it's a very, a question which is in the news and we keep reading about it. Okay, sir. किसी का mic unmute नहीं हुआ, I can't hear. Tanya, mute yourself. देखिए ऐसा है कि in the modern world and all the modern armed forces which are there, and as I told you,
no single arm can fight a war for the nation. So it has to be a combined effort. And for that combined effort to happen, there has to be unison, there has to be command and control. That is possible only once we have a kind of system where all the three elements of the armed forces are integrated. So we are learning from that. And we have seen there are various operations. Kargil was one. There were other operations where there was participation by all the three forces. In fact, you are say what questions you asked me, it is the theater command concept is based on Kargil Review Committee. तो कारगिल युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद एक कमेटी का गठित की गई थी और उनको ये देखना था कि युद्ध में जो खामियां थी, हमारी तरफ से जो कमियां थी, हमारे जो शॉर्टफॉल थे, हमारी वीकनेस थी, उसके ऊपर दे हैड टू फाइंड रेमेडियल मेजर्स। तो उसमें एक उनका प्रस्ताव था, प्रपोजल था, इंडिया शुड हैव थिएटर कमांड्स। ये बहुत उस वक्त की बात है, स्लोली नाउ इट इज इवॉल्विंग एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम इंडिया विल सी थिएटर कमांड्स। जैसे कि अभी आर्मी की 7 कमांड है, एयरफोर्स की 7 है, नेवी की 3 है। तो जब मिक्स हो जाएंगी तो जो रिसोर्सेज हैं इनका भी मर्जर हो जाएगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो जो पैसा बचेगा उसको हम मॉडर्नाइजेशन में लगा सकते हैं या किसी और जगह लगा सकते हैं। तो ये वक्त की डिमांड है। इट इज दी मॉडर्न एरा में थिएटर कमांड होना जरूरी है। हालांकि इसमें भी अपने हर एक फोर्स का एक अपना मानना है, एयरफोर्स का अपना कुछ मानना है, नेवी का अपना कुछ है, आर्मी का है, पर इवेंचुअली जो है थिएटर कमांड का कंसेप्ट ऑलरेडी आ चुका है। इट्स मैटर ऑफ टाइम व्हेन दे आर एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री। And sir, one more question. Yeah, please go ahead. Sir, I was seeing the chart, sir. I found, sir, कि North Korea is having no aircraft carrier, sir, in the Navy, sir. So, sir, but we have seen that aircraft carrier plays a very, we can say, efficient role in any war and all. So, what do you think, sir? Means why I was getting confused, sir, why it is not having a single aircraft carrier, sir? Can you, sir, tell? First thing is that what you mentioned, can somebody unmute? Okay, another is presence of a carrier for any country is a matter of pride because it plays a very crucial role. पर उसके लिए पैसा होना चाहिए। कैरियर बनाना इतना आसान नहीं है। अगर आपने कैरियर बना भी लिया, उसके बाद कैरियर को चलाना, उसको सस्टेन करना, इसमें बहुत पैसा लगता है, इसकी ट्रेनिंग करना। नॉर्थ कोरिया उतनी रिच कंट्री नहीं है वेयर दे कैन अफोर्ड टू हैव अ कैरियर। इंडिया इज लकी। अभी हम इसके पहले जो हमारे कैरियर से दे वर फ्रॉम यूके, रशिया, नाउ वी आर इंडिया इज मेकिंग इट्स ओन कैरियर। तो आपको शायद मालूम होगा विक्रांत जो बनेगा अभी कमीशन हो जाएगा अभी अगस्त में। indigenous aircraft carrier of the Indian Navy, which is a pride. It's a pride for the nation because हम बोलते हैं कि आत्मनिर्भर जो भारत है हमारा, यहाँ एक उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो नॉर्थ कोरिया अच्छा है कि उनके पास कैरियर नहीं है। बिना कैरियर के उन्होंने सबके नाक में दम कर रखा। कैरियर होता तो क्या होता? Yes, sir. Sir, they are having 78 submarines also, sir. They are working on their submarines. How many submarines? Sir, 78 submarines. No, I don't think. I think क्या होता है कि लोग प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं। प्रोपेगेंडा वॉर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है आजकल। 78 तो चाइना के पास भी नहीं है, तो उनके पास तो नहीं है, मुश्किल है। Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay. Rahul Dev. Yes, sir. You may ask question. Yes, sir. सर, जैसा कि हम जानते हैं सर, कारगिल वॉर में हमारी तीनों सेनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन मैं सर स्पेशली
नेवी के लिए पूछना चाहूंगा सर, आप उस टाइम सर्विस में थे या नहीं, और यदि आप उस टाइम सर्विस में थे तो सर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा सर? मैं उस वक्त बिल्कुल नेवी में था। मैं 87 में कमीशन हुआ, तो उस वक्त मेरी 12 साल की सर्विस हुई थी। 99 में हुआ है। मैं विशाखापट्टनम में था, मुझे अभी भी याद है। और मैं एक माइन स्वीपर शिप होती है उसमें था, तो हम लोग तैयार थे कि अगर जरूरत पड़ी, अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम आगे जाएंगे और नॉर्थ अरेबियन सी में जाएंगे। और जो भी उधर, तो माइन स्वीपर का रोल वो नहीं होता। माइन स्वीपर का रोल ये होता है कि अगर एनिमी जो शिप्स हैं उन्होंने कोई माइन आपके पोर्ट में लगा दी, उसको क्लियर करना। तो मुझे याद है अभी भी 99 में, मतलब नेवी की सारी शाखाएं थी वो एक्टिव थी, सब अपने काम में लगे हुए थे और युद्ध की पूरी तैयारी में थे। Sir, we can take a last question, sir. Aman Chaurasia, you can ask. जय सर। जय हिंद, जय हिंद। सर आई वांट टू नो कि जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर्स होते हैं, इनमें क्या क्या कंडीशंस इफेक्ट डालती हैं इस वॉर में, और किस आर्मी को ज्यादा एडवांटेज और डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है हाई एल्टीट्यूड वॉर में? ये सब्जेक्ट जो है कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर डिफरेंट है। ये आर्मी ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बट नेवरदलेस बेसिक टर्म्स में क्या होता है, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो टेम्परेचर बहुत फ्रीजिंग होता है, तो जो कोल्ड रिलेटेड जितनी भी डिसीज होती हैं वो उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। फ्रॉस्ट बाइट है, योर यहाँ पे शरीर को डैमेज हो सकता है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, अस्थमा है, ब्रेथलेसनेस है, वो सब होता है। तो ये जो ऐसा है कि ये जो ना इसी में किसी को फायदा है ना नुकसान है, कि जो वेदर है जो ये दोनों पार्टी के लिए, तो जो हिंदुस्तानी को जो परेशानी वो पाकिस्तानी को भी होगी। थैंक यू। Last question from Rishabh Tiwari. If you raising the hand, if not, then we have to play. Sir, Usha madam, are you there? Usha madam, are you there? Okay. Sir, with your permission. Hello. Hello. Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Kindly present a vote of thanks to our chief guest. So such an interactive session. We are glad to be associated with you, with our cadets in this opportunity, to give us opportunity to learn something to our students. Thank you very much. Our cadets could learn a lot of to interact with you with a dialectic question. That was not a one-way session. There we have a two-way session, and our students and cadets could learn a lot. Thank you very much, sir. Thank you, the coordinator, Gautam sir, or Sharaf sir, to be with us, and all the students and other faculty, as I could see with the virtual platform, to interact with us, to associate with us. Thank you very much to all to be with us. Thank you. Sir, with your permission, can we play a NCC song, sir? Yes, you can. And what is scheduled after that, after this song? After we are going to end this program after this song, sir. So can I say something before you play the song, and thereafter we can... Yes. Sure, sir. Okay, so let me put on my cap first. This is a veteran's cap. That means I am retired if I put on this. Anyway, thank you very much, all the esteemed audience here, and all the NCC officers, especially Gautam Saab, who have given me this opportunity to interact with all of you. And I'm really moved that I won't say that I'm a chief guest. I'm like you. I'm one of the participants, and it's an honor that you have given me that status. It was a very good session. I wish I had more time than. क्या होता है कि normally in our area people are not well versed about the Navy.
बिकॉज हम आर्मी से डील करते हैं, एयरफोर्स से, मे बी आर्मी, तो जानकारी ज़्यादा नहीं होती। अगर मेरे पास ज़्यादा समय होगा, अगर कभी हुआ, तो मे बी वी कैन हैव सम एक्सक्लूसिव सेक्शन अबाउट द नेवी के बारे में जानकारी देना, that we can done. But it's nice to see all your participants. They were inquisitive, they wanted to know, and about the not only Navy, about the Kargil operation, Kargil war as such. And as we have seen in the TV footages, that it was a great war won by the Indian armed forces, predominantly by the Indian Army, and the supreme sacrifices made by young officers and soldiers should always remain with us, and we should always pay our tribute to all these people. They have sacrificed their life for our protection, for our safety and security at a very young age. तो हमको उस हिसाब से देखना है कि हम तो दूर बैठे हुए हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, उन पे क्या बीतती होगी. Nevertheless, that should not discourage our own people to join the Indian Armed Forces. तो मेरी तो उम्मीद है ये जितने भी आपके एनसीसी कैडेट्स हैं कि आप बिल्कुल कोशिश करिए एंड यू एम टू बी एन ऑफिसर. आप ऑफिसर के लेवल पे उसको टारगेट करिए, उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करिए. तो उस हिसाब से जब आपके एम्बिशन उतना हाई होगा तो आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे. एंड आई एम श्योर आई वांट टू सी many of you joining the Indian Armed Forces, and best wishes to all of you. Jai Hind. And Navy बोलते हैं शनो वर्णा. Sir, we have Lieutenant D.K. Saraf, sir. With your permission, sir, if you want to say some words, sir. Thank you, Dr. Gautam and Dr. Usha Madam. आज इस सेशन में बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन हमारे भदौरिया सर ने प्रस्तुत किया. ये हम लोगों का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि सर ने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे बीच निकाला. और फर्दर सर हम आपसे फर्दर आपका भी गाइडेंस चाहेंगे. जब कभी भी अगर हमारा कभी इस तरह का प्रोग्राम यदि होता है, जैसे इंडियन नेवी डे जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस दिन सर हम आपको अगर आप अवेलेबल रहे सर, तो इंडियन नेवी के बारे में भी हम लोग अपना एक अच्छा आपसे वक्तव्य सुनने की हम लोगों की आशा रहेगी. हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि आपका मार्गदर्शन हमको समय समय मिलता रहे. आप हमारे इस प्रोग्राम में आए सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और साथ ही मैं अपने सारे प्रतिभागियों से, एनसीसी कैडेट्स और डिफरेंट स्टेट्स के हमारे बीच एनओ साहिबान हैं और डिफरेंट स्टेट के हमारे पास कैडेट्स भी जुड़े हुए हैं, जिसमें एसडी और एसडब्ल्यू के एक्स कैडेट्स भी हैं, जिन तक हम लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम पहुंचाने की कोशिश की. और इसमें सर आपका हम लोगों को मार्गदर्शन मिला. इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. जय हिंद. थैंक यू वेरी मच. इट वाज अ वेरी नाउ एनसीसी सभी कैडेट सावधान मुद्रा में बैठेंगे और एनसीसी गान समाप्त होने के साथ ही ये प्रोग्राम स्वतः समाप्त माना जाएगा. गौतम जी. So with your permission, sir, can we start, sir? Yes, please go ahead, and thank you once again to all of you, and hope to see you very soon.
जय हिंद सर. जय हिंद, जय हिंद. Sir, with your permission, sir, we end program. Thank you very much. And you can close down, please. Jai Hind to everybody. Jai Hind. Jai Hind, sir. मैं नहीं कर पाई, नहीं इसके अंदर टाइप कर रहे हैं ना सबके पेपर पर. अभी अपन लीजिए होगा प्रोग्राम. क्या करना अपन? क्या कह रही थी? क्या कर रहे थे? नहीं, उस समय क्या ना कि हिला नहीं जाता है. अच्छा, कल ये लेटर क्या थे, ये लेटर